Hello, friends. Good evening. Namaskar. This is Vishal, and I'm here to discuss Nifty's trading plan for tomorrow, which is Monday, 19th January 2020. I'm recording this video right now, which is January 19th, and the time is 7:15. All right. Okay. Now, let us quickly discuss what happened on Friday, because based on Friday's activity, we will make the trading plan for tomorrow. Now, this is going to be a very interesting week because of many factors. Number one being that next week will be the week before January month expiry, and post this week we will have the rollovers and then the movement for the budget and all those things will start. So this week behavior will shape how we perform in the last week. Also, there is one time cycle coming up after 26th of January. So the time cycle effect will also be something to watch for. So 26 January, this is the date that I'm interested and I'm looking forward to. So what I feel is that in this week we will have one more round of overall consolidation type of movement, and once this time cycle comes, that is next Monday, we will see explosive move. Now, whichever side it will be really big one. So let us see what is the view for tomorrow. Okay, now on Friday, I had come online for my live session. Every day I come online during the afternoon at around 12 o'clock. So at that time when I had come, we had discussed that there is a good possibility that Nifty futures will go up once again, test the 12,400 mark and come down again to close near 12,375. Now that is almost uh, precisely very accurate, because if you see Nifty January futures closing is 12,377. So that is almost the level which we were talking about. Now, if you see one thing, entire last week, if you see this entire last week, market could not go anywhere. So basically it was packed between 12,400 on upside and 12,300 on the downside. There is one good gap which is still here. This was due to the previous Monday gap up opening, and market has been trying to break this level, but it has failed to do so as of now. Now, tomorrow the mob level is basically the make or break level that I give every day. Mob level is a level which defines the trend. So if prices are above the mob level, that means market is bullish, there is sign of strength, and we look for buy on dips type of approach, buy on dips type of trade, or you can say long trades. On the flip side, if market is trading below the mob level, that means that market is bearish, there is sign of weakness, and we look for shorting type of trade. All right. Now, for tomorrow, the mob level stands at 12,355. I know that many of you must be thinking that we are having the same mob level since last 4 5 days, but thanks to market, we do not have any other level, because this is the level which market is giving us. So it is not in our control. So 12,300 will be the mob level. So I'm just writing it down, 12,355. Now, this is very important for tomorrow. Please make sure, please note this. This is very interesting for tomorrow. Why? Because if we break the mob level, then I see eventual breakdown of 12,320. So the downside level is 12,320. Now, once this is taken out, then definitely we are going to see 12,275. So 12,275 becomes my R2, or you can say, sorry, S2 on the downside. So 12,320 will be the first support, and 12,275 will be the second support respectively, and 12,355 is the trend deciding level. If market is trading below 12,355, I will look to short this market for mentioned targets. If price is sustaining above this level, suppose if market opens gap up, it may open gap up because of Reliance Industries and HDFC Bank results. So results were pretty good. I do not expect bad results. I think only IndusInd Bank was a pretty bad one, but I see most of the results doing fairly okay. And market will basically market knows this thing that most of the results are going to be okay.
So if at all, if any companies come up with bad result, it will be hammered very badly, and this is what happened with IndusInd Bank. सो हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ भी खुले, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की बहुत अच्छी रिजल्ट्स आई है. सो इवन इन दैट केस द अपसाइड टारगेट, आई एम गिविंग ओनली टू अपसाइड टारगेट फॉर टुमारो. फर्स्ट इज 12,425. ये वो लेवल है जो हम पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं. सो मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक अबाउट दीज रेजिस्टेंसेस. सेकेंड मैं दूंगा 12,480. ये काफी डिफिकल्ट होगा बाजार के लिए इस लेवल को टच करना, बट अगर ये टच करता है तो बहुत अच्छी बात होगी. दैट मीन्स दैट मार्केट हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, एंड वी हैव फाइनली गॉट वन मूव ऑन अपसाइड. नाउ ये इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये जब हो जाएगा तो उसके बाद हमको एक्चुअली पता चलेगा कि बाजार अब किस स्टेट में है. ओके, सो दीज आर द लेवल्स एंड आई विल प्ले बेस्ड ऑन द मॉब लेवल. नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या 13,000 आ जाएगा. इस टाइप की चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा मूव जो है वो बजट के पहले नहीं होने वाला. बजट के पहले जो है मार्केट को एक पोजिशनिंग किया जा रहा है, एंड इसके लिए बाजार ये कर सकता है कि एक बार ऊपर का स्वाद चखेगा एंड इसके पहले एक बार नीचे का लेवल भी टेस्ट करेगा. सो दैट इज ऑन अ हाइयर टाइम फ्रेम. सो पहले मैं कल का मैंने एक एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है, वो ये है. ओके, नाउ थोड़ा सा मैं वीडियो को लंबा करूंगा बिकॉज आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग एट अ हायर टाइम फ्रेम. सो अगर हम निफ्टी की चार्ट को जूम आउट करते हैं एंड वी लुक ऑन द हायर टाइम फ्रेम, तो हमको ये दिखाई देता है कि वीकली एक 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, राइट? So this is a nice breakout, and before this breakout we had got a shakeout. एक शेकडाउन मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला था. उसके बाद से जो है बाजार यहाँ पे स्टक हो गया है. ये आप इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपको चैनल रेजिस्टेंस दिखेगा इस तरीके से, राइट? सो दिस इज व्हाट इज एक्टिंग एज अ बैरियर. इसीलिए ऊपर के स्तर पे जो है फ्रेश बाइंग करना, इंडेक्स में लेवरेज लेके एफएनओ में ओवरनाइट होल्ड करना, ये सारी चीजें जो हैं खतरे से खाली नहीं है. सो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखें. For now, we will act based on the level on day-to-day basis, but overall, yes, market is facing lot of resistance on upside. And अगर इसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमको सेंसेक्स का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि एट क्रूशियल जंक्शन वी शुड वॉच सेंसेक्स. सेंसेक्स जो है हमको काफी अच्छा एक आइडिया देता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है. अगर सेंसेक्स के वीकली चार्ट को हम एनालाइज करें तो ये एक लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट मैंने ड्रॉ किया है एंड्रूज पिचफॉर्क टेक्निक को यूज करते हुए. 2008 के बॉटम से इसको मैंने प्लॉट किया है एंड पिछला बेयर मार्केट को मैंने एज अ पिवोट लाइन इसको कंसीडर किया है. सो दीज आर दी पिवोट्स व्हिच आई हैव यूज्ड फॉर ड्राइंग. नाउ अगर इसको हम एनालाइज करें तो मैं फिबोनाची का बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों. तो फिबोनाची मैं बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, 2 मिनट की ट्रेडिंग हो या कई सालों की ट्रेडिंग हो. सो आई हैव अ गुड होल्ड ऑन हाउ टू यूज फिबोनाची. And that is something which I definitely try to teach my students. जिन स्टूडेंट्स को एक फिबोनाची की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनको मैं थोड़ा डिटेल में भी समझाने की कोशिश करता हूँ. Now, if we talk about Sensex, so what I see is that there is a huge resistance and this is a cluster of resistance. इसको अगर मैं देखूं, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये इस प्रकार से है कि 2008 का जो पूरा जो डिक्लाइन था उसका 261% एक्सटेंशन यहाँ पे है. ओके, देन इसके बाद ये जो हमारा जो पहला जो यहाँ पे क्रैश हुआ था 2018 के जस्ट स्टार्ट में, ओके, 2 साल पहले, इसका जो है भी एक एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे आता है. इसके बाद ये जो क्रैश हुआ था अगस्त 2018 में जब एनबीएफसी क्राइसिस, आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था, इसका 1.618% एक्सटेंशन यहाँ पे. फिर ये जो क्रैश हुआ था जो इलेक्शन के बाद हुआ था, इसका 1.618% रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सॉरी एक्सटेंशन प्रोजेक्शन यहाँ पे है. तो अगर आप देखें तो इसका मैंने नहीं निकाला है, इसका भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा. बट ओवरऑल ऑल दी फॉल्स व्हिच वी हैव सीन, ऑल दी मेजर क्रैशेस व्हिच वी हैव सीन, इनका जो है एक गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन सब इस क्लस्टर में आ रहा है. और ये लेवल्स क्या है मैं सेंसेक्स पे आपको बताता हूँ.
439 से लेके ये आपका जो है 43,200 समथिंग के आसपास है, यानी इस ब्रैकेट में है, इस 800 पॉइंट के ब्रैकेट में है। यानी ये एक चीज को ये दर्शाता है कि ये जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड इट विल बी a very humongous task for market to break above this without undergoing a significant correction। और अगर पिचफॉर्क के टर्म्स में बात किया जाए तो ये जो मैंने स्लाइडिंग पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ की है, ये इसलिए ड्रॉ की है बिकॉज एवरी टाइम इन लास्ट 2 years what you have seen is you have got a crash and similarly at the bottom you have got a sharp bounce back। So will history repeat this time? It's a $1 million question। I do not know everybody know anyone knows this, but our job is to act smartly, follow the levels, do not get influenced by sentiments what others are doing। हमारा काम है टेक्निकल के हिसाब से चलना, तो हम वही चीज करेंगे। अगर क्रैश शुरू भी होता है तो वी विल डेफिनेटली capture it। How we will capture it? By using our mob level on daily and weekly basis। That's how we do it। All right। So ये था थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो आप लोगों को बताना भी जरूरी था। So something might happen that we undershoot or touch or slightly overshoot and then we might fall back again like this। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली जो है मार्केट 30% करेक्शन देता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी बुल मार्केट। जो यहाँ पे हुआ, जो पहले भी हो चुका है, पहले के काफी सालों में ये पैटर्न आपको देखने मिलेगा। इट्स बीन रियली लॉन्ग, ऑलमोस्ट एक 4.5 साल 5 साल हो गया है कि एक बड़ी करेक्शन नहीं मार्केट में आई है। सो हो सकता है समवेयर फ्रॉम दिस लेवल वी माइट सी दैट थिंग हैपनिंग, बट स्टिल दैट लेवल इज वेरी फार। अगर हम सेंसेक्स को आज देखें तो सेंसेक्स 42,000 पे है और ये जो लेवल्स हैं अभी भी एक ऑन एन एवरेज 700 से 800 पॉइंट्स ऊपर है मिनिमम। ठीक है, तो इसको अगर हम निफ्टी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 250 से 300 पॉइंट ये वर्कआउट कर सकता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे निफ्टी के अभी के प्राइसेस में तो आपको रफली जो है 12,600 समथिंग, 600 650 के आसपास ये निफ्टी पे लेवल्स आता है। सो अभी भी देयर इज गुड स्कोप। सो आप अर्ली शॉर्टर मत बन जाइए क्योंकि जनरली मार्केट अर्ली शॉर्टर्स को पहले ट्रैप करता है। सो दैट माइट हैपन। ओके, I will from now on I will start updating on the higher time frame picture of markets, especially Nifty, Bank Nifty and Sensex, because that is something very important as of now। जैसे हम बजट के पास पहुंचेंगे इनको देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। एक और चीज अगर मैं बताऊं तो सेंसेक्स जो डेली, जो अगर डेली चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और टाइप का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप देखें तो आपका बॉटम टू बॉटम अगर हम चैनल ड्रॉ करते हैं और इसको प्रीवियस हाई से कनेक्ट करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट देयर, राइट, इट इज ऑलमोस्ट देयर। सो ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। सो द ओवरऑल पॉइंट इज अपसाइड इज कैप्ड and it is very risky to play leverage, it is very risky to build severe long positions without you know without thinking in these terms of risk management, margin of safety and all these things। Okay, so nevertheless मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि निफ्टी फ्यूचर्स जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग हमको कल कैसे करना है। मॉब लेवल जो है ये हमारा 12,355 है, ऊपर में 12,425 का एक पहला टारगेट है लॉन्ग साइड में, जो कि मेरे ख्याल से हो सकता है गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो शायद उसमें ये अचीव हो जाए। ऊपर मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा and if I see any kind of failure about 12,425 then I will definitely look to short this market। On the downside, if market is breaking my mob level of 12,355 then also I will look to short this market। First target will be 320 and this if comes then I think it will break down and we will see 12,275। so इस प्रकार से दोस्तों ये एक कल का व्यू है मेरा, ये ट्रेडिंग लेवल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड इफ यू लाइक इट देन डू शेयर इट। यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई विल नाउ ट्राई टू do all my videos on YouTube, so please subscribe to the YouTube channel। all right, thank you so much for your time and let us meet tomorrow during market hours in my live session। thanks sir, thanks sir, take care, bye bye।